Good morning, Namaskar, Sat Sri Akal, and Adab to all my valuable viewers. So, today we are going to discuss a topic that is how important it is to have a good leader. The nation, the organization, the family, society, everywhere you require a good leader. And without a leader, the gathering becomes a भीड़. एक भीड़ झुंड है, डायरेक्शनलेस, वो क्या कर रहा है उसको खुद नहीं पता है. तो यू डेफिनेटली रिक्वायर ए वेरी गुड लीडर, and to become a leader and to get a good leader and to be a good leader requires a lot of effort, and everybody cannot be a good leader. So for that, people have to struggle, you have to prepare yourself, you have to have the sacrifice element in yourself. You must be able to ignore you should have the patience, you should be able to wait. All these ingredients an individual must possess to take up the leadership post. That is what they call, that's a world leader. He leads the whole world, gives a direction to the whole world. Pandit Nehru was called as a good statesman in the international level. Likewise, there are so many international personalities who are accepted and loved, and they were the leaders. You must have that element of sacrifice also for the people to whom you are leader. Wars में you must have a fine leader. People should die for you, people should listen to you, people should appreciate you. And that these are I will today discuss the 12 traits of a great leader. First trait is he must be confident and never arrogant. जो वो काम कर रहा है उसको उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए. ही मस्ट बी कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, एंड my team can do it. The team must be inspired in such a manner, trained that they can do it. And if somebody is doing some mistake, you must have seen a film in the border that there were some of the people, those who are not behaving well. But in most of the places, the leader of that team was never arrogant. He was confident we will be able to win the war, we will be able to solve the problem. So the first ingredient that the leadership must have is he must be confident वो क्या कर रहा है, and second, he should not be arrogant. Then second is he must be able to empower the teams. सब कुछ सेल्फ सेंटर्ड अपने ऊपर ही रखने से organization and institution and group doesn't work. You must try to empower your team. It should be teamwork. The entire team should die for you. It is not that कि छोटा से कोई benefit के लिए that you will not give. And if somebody comes for a benefit, you will उसको गेट का रास्ता दिखा दोगे. There are certain organizations I have worked. People were not asking, even the people were not asking, the ladies were not trying to ask for a statutory maternity leave. And the boss was so arrogant, if somebody goes and tell that I am being in a family way, so immediately that person was getting sacked, that lady was getting sacked. So the boss must be confident, he should empower his team, the team should feel confident, and the next is he must be a good listener. If you are not a good listener, अगर आप कोई आदमी, maybe he may be talking nonsense, he may not be that intelligent, but if he is having some problem and his way of presentation is not that professional and that impressive, but at least you should have the power, you must develop that power, you must have that ingredient in just yourself that
You must listen, you must be a good listener. And after listening to you, half of the problem of the aggrieved person gets resolved. He will feel comfortable that there is a some एक कंधा है जिसके ऊपर हम सिर रख करके अपने दुख दर्द बता सकते हैं, और उससे सुनने से ही आदि कहते हैं ना कि अपना दुख बताने से दुख कम हो जाता है, अंदर रखने से दुख बढ़ जाता है. प्लीज ट्राई टू, एंड somebody इज रिक्वायर्ड. अगर आपको दुख बताना है तो कोई आपको लिसनर भी तो चाहिए, कोई कंधा भी तो चाहिए जहाँ पर सिर रख करके आपको आप रो सके. सो ही मस्ट बी ए गुड लिसनर, ही मस्ट बी फेयर. आपकी माँ है, आपके फादर है, so long as you are not grown up, he is the leader. While doing, he must not be biased. In certain families, certain even महाभारत में भी ये डिस्कस किया गया है कि there was a that Bhim was the middle child. So people were telling, and he was never feeling that my mother is biased against me because I am in the middle position. In certain states, in certain families, the eldest child is well looked after and the youngest descendant is पलेठी का बच्चा, or the eldest child, and the youngest child, they are better looked after. If you want to become a good father, good mother, you must develop in that not only that you should be unbiased, you should be fair. By your actions, it should appear also. आप दिल से कहते हैं कि मेरे दिल में तो कोई डिफरेंस नहीं है, सब एम्प्लॉयज़ एक जैसे हैं. बट इफ़ यू आर डिवाइडेड इनटू कास्ट, साहब ये कास्ट है, ये ब्राह्मण है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब है, ऑल आर इक्वल. हमारे देश का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन ही है, सबका साथ सबका विकास. देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट, क्रिमिनल एंड रिलीजन. एंड इट इज़ नॉट, शुड नॉट रिमेन ओनली एज ए स्लोगन, it must be converted into a reality, and the good leader can do it. Then emotionally you must be intelligent. Those who do not are those who are not intelligent emotionally. ना आप किसी की भावनाओं को समझ सकते हैं और ना आप समझने की चेष्टा करते हैं. जब आप समझ ही नहीं सकते, समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो अगर आप किसी टीम को लीड करते हैं, देर आर सो मेनी पीपल जिनकी डिफरेंट घर की प्रॉब्लम है, फैमिली की प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है. अगर आपके अंदर इमोशन, यू कांट सिंपैथाइज विद दैट पर्सन, इफ यू कांट अप्रिशिएट द इमोशन, यू कैन नॉट डिलीवर द गुड्स. पीपल विल नॉट डाई फॉर यू. देन सिक्स्थ इज यू मस्ट एनकरेज द फीडबैक. आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, यू मस्ट कलेक्ट दैट फीडबैक. ये नहीं कि आप अपनी बुराई सुन ही नहीं सकते. आप सुबह से शाम तक जो है आप एक ही चीज़ रट गए हैं कि जो भी मिले मेरी तारीफ करे, और जिसने मेरी बुराई करी ही लूजेज हिज जॉब. सो यू मस्ट एनकरेज नॉट ओनली ए पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक भी. तो वहीं से तो आपको इम्प्रूवमेंट आएगी. I remember there was a story, एक राजा थे, he used to listen his तारीफ, तो उसको कहीं लोगों ने देखा कि वो कहीं चीज़ें गिर जाने से उसने अपने सिर में कुछ इतर लगा रहा था, ज़मीन में गिर गया, तो उसने उंगली से उठा करके अपने सिर में लगा लिया. उसको लगाने के बाद देयर वाज अ मैसेज इन दी एंड, उसकी जो किंगडम में था, एक मैसेज चलाया गया, राजा बहुत कंजूस है. It was a feedback to the king. But then he tried to अपने नालियों में, अपनी सड़कों में, सब जगह उसने इतर बिछा दिया. But that of course, as far as feedback was concerned, he was responding. He did not punish anybody. He responded. Of course, he got a stigma. साहब वो स्टिग्मा नहीं साफ हुआ कि साहब वो बंदा कंजूस लोगों ने कहना चाहिए. बट ही अप्रिशिएटेड दैट फीडबैक. फीडबैक इज टू कोई भी काम आप कर लीजिए, आप लोग आपसे डरते हैं. लोग घरों में, फैमिलीज में, सोसाइटी में, म्यूनसिपल कमेटी में, पॉलिटिक्स में, राजा इन ए डेमोक्रेसी जे स्प्रेड सम सॉर्ट ऑफ ए फियर कि अगर साहब को पता लग गया कि हम उसकी बुराई कर रहे थे
So I will lose my job. So I will never give a feedback. I will keep quiet. And unless there is a feedback, how can there be a improvement? And improvement is a continuous process. So that one of the source to improve is you must collect the feedback. और जब तक आपको फीडबैक नहीं आएगा तो आपको अपनी औकात और आपकी सच्चाई कैसे पता लगेगी? Then seventh, always learning. How can you just see, आज आपके घरों में जितने इक्विपमेंट थे सब ऑब्सोलीट हो गए हैं. कैमरास गॉन, मोबाइल पुराने टेलीफोन्स गॉन, टेलीग्राम नहीं होती, मनी ऑर्डर नहीं होते, वो टाइपराइटर किसी ज़माने में सब चले गए. ऑल इक्विपमेंट्स एंड ऑल जो नॉलेज, राइटिंग ए लेटर, सेंडिंग ए मेल, रजिस्टर्ड. नाउ रिसेंटली फ्रॉम October they have start sending the registered posts. Only one speed post is there by the post office. So these are all, you should be that they call it the 3L, lifelong learning. And especially those professionals say there is one doctor, some lawyer is there. If doctor is not continuously updating his knowledge, how can he be up to date? How can he can run his practice? There was a time जब bypass surgery such a big, now इतने इवन जो आपको स्टेंट फिक्स करते हैं उसको आदमी को बेहोश भी नहीं करते. दे जस्ट डू इट. वो आदमी देखता रहता है. और व्हाट ए टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज लेटेस्ट. इफ यू आर नॉट, अभी आँख का आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन, इट डजंट टेक मोर देन 10 मिनट्स. 10 मिनट के अंदर आपको लेंस फिट करके आदमी खुद ही ऑटो लेकर के या कार लेकर के अपने घर आ जाता है. इवन दे डोंट इंसिस्ट अपॉन कि साहब कोई आपका घर का रिश्तेदार, अगर आपका कोई दोस्त भी आपके साथ जाता है, दे आर नॉट वेरी पर्टिकुलर बिकॉज द सक्सेस रेट इज 100%. इट इज ऑल ए गिफ्ट ऑफ द technology. We are, the whole world is looking for a day when we are able to break through and solve this cancer problem. TB, they have now totally eliminated. It is comes under a curable disease. 100% they have achieved that success. So that is, and every doctor, if he doesn't keep himself up to date with the latest magazines, latest research on that topic, how can he treat the patient? His practice will go to hell. So the learning should be a continuous process. They call it 3L, lifelong learning. जब तक आप आखिरी दिन तक है, you must be learning. And those who do not change is the only thing which doesn't change. It is a permanent phenomena. And those who do not change with the time, they are left behind. So please be learner, lifelong learner, and after learning, change yourself, change your attitude, change your style of working. Then 8th, sports teams growth. बहुत सारे बॉसेस जो है वो आपकी ग्रोथ से जेलस होते हैं. यू टेल देम दैट आई हैव जॉइंड दैट कोर्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, मुंह बना लेंगे. दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू, दे विल स्टार्ट हेल्पिंग यू. पीपल विल कीप देयर talent, their academics, their further improvement process secret, because he was a negative person. In one of the organization I was working, I was telling that staff, please do some course, ये कोर्स कर लीजिए. तो कह रहे सर अगर मालिकों को पता लग जाएगा. अरे तो मालिकों को पता लग जाएगा आप कोई गलत काम कर रहे हो क्या? You are updating your, that knowledge will be utilized for the betterment of that institution. Don't be afraid. Please carry on. But then I talked to the owner. They were also very good. They had nothing. This was only an imagination of the people that my boss will not tolerate, he will not be happy with my growth. So be happy, encourage your people, give them the facility. I was working in an organization as one of the premier institution, Maharatna company. So during my course, I did all of my MTech and all those things while in job. My bosses were so nice. They were arranging, my even for clubbing my educational mission and that of the company's task, so that I could be financially relieved. Financially, they used to help me, encourage me.
all the facilities in the organization, wherever I required to complete my education, research and all that, they were providing. So you must टीम को ग्रो करिए. अगर जो टीम आपकी डिप्लोमा के बाद आई है, encourage them to do some degree, then allow them to do something post graduation, then give them recognition. अगर किसी ने अच्छा काम किया है उसको अप्रिसिएशन लेटर दीजिए, रिकॉग्नाइज करिए एट वेरियस फोरम. You must tell to the people that this man has done a wonderful job. Don't undermine that person. Don't try to hide that person. उसको अगर जब सुबह आए तो उसको डांटना ही शुरू कर दिया, उसकी पर्सनैलिटी को दबा दिया. Nothing doing. Please give them recognition, appreciation, and if possible some award. Award should is a very, very important tool. Looks a small paper or some plaque or something, memento. Don't value it in terms of rupees. It has got an appreciation, it has got a value worth lakhs and lakhs of rupees. And please try to do that. जब तक any work which is not recognized, that disappoints a person, that kills the initiative of his colleagues. So please allow the people, recognize them, allow them to do extra work, allow them to do wonderful jobs. Then calm under pressure. There is a tremendous work pressure. अगर आप खुद ही टेंस हो जाएंगे, आई हैव सीन सो मेनी पीपल, थोड़ा सा प्रेशर आता है उनके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, दे अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. बी काम एंड अलाउ योर टीम टू बी काम. तो प्रेशर आता रहेगा, डेफिनेटली आता रहेगा. सो मेनी बिजनेस प्रॉब्लम्स आर देयर, बट यू एंड जेन्युइनली शुड नॉट बी ओनली प्रिटेंडिंग. यार दिल से कुछ और है, ऊपर से कुछ और है. जेन्युइनली केयर करिए हर एक आदमी की. कभी कभी उससे पूछिए, आपके बच्चों के बारे में पूछिए, उसकी फैमिली के बारे में पूछिए, उसके वर्क के बारे में पूछिए, उसकी और जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करिए. उससे एक मैसेज जाता है कि ये बॉस ही केयर्स फॉर मी. ए नॉन केयरिंग बॉस हैज़ नो रिस्पेक्ट. ही इज नॉट कमिंग इन ए जंगल. यार कोई नरक थोड़ी काटने आया है. ही हैज़ कम टू डिवोट, dedicate to the nation, dedicate to the organization and for the welfare and take care of his own family. Then please last, try to ignore small mistakes. अगर किसी ने मिस्टेक करी है तो उसको एडवाइस करिए. प्लीज मिस्टेक, who doesn't do mistakes? To do mistake, गलती करने वाला इंसान है. जो कभी गलती नहीं करता है वो भगवान है. तो अगर कोई आदमी मिस्टेक करता है, बी ए लीनियंट, बी ए पॉजिटिव, ट्राई टू टेक केयर ऑफ हिज मिस्टेक्स. तो किया है उसको सुनिए और उसको सॉल्व करिए. And try to ignore wherever possible, wherever some blunders have been done, and if you feel that the punishment is not to be done, then the punishment should also be done. But mistakes are good. Those who look for perfection never look for that, just a waste of time. पर हर एक में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं. You must have a broader outlook. So with this, we conclude this lecture on the 12 traits which a good leader must have. And good leader takes the organization, takes the nation, takes the whole thing, For him, sky is not the limit. So having a good leader is good luck. With this, thanks a lot. With a request to all my
listeners, viewers, to please subscribe to my channel, view, share. Thanks a lot.